हाय गाइस, वेलकम बैक. संदीप एंड लीगल टीम ऑल्सो वेलकम. ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है. हमें बहुत गंदगी साफ करनी है. मैं एक वीडियो बना पाऊँ उससे पहले संदीप महेश्वरी और सारी गैंग जो है मेरे पे 400 नए चार्जेस लगा देती है. तो हमें सब बातों पे जवाब देना होगा. अगर कोई पॉइंट आपको लंबा लगे तो आप आगे स्किप करके देख सकते हो. बहुत कुछ है इस वीडियो में, इसलिए प्लीज watch this video carefully until the end. Especially Sandeep's legal team. You guys should definitely watch this till the very end. ये सब तुम्हें कोर्ट में डिफेंड करना है. Anyway, संदीप महेश्वरी की चुल का कुल सार ये है. पहली बात, इस पोस्ट में से पहली बात, क्या मतलब मैं ये चीजें कोर्ट ले जा रहा हूं तो मैं अपने पोस्ट डिलीट कर दूंगा? कोई मतलब है इस बात का, या सिर्फ केस की छतरी के नीचे अपनी एम्बैरेसमेंट छुपा रहे हो संदीप महेश्वरी? ये तुम्हें क्या शौक है अपनी बातें डिलीट करने का है? 24 मई को, एक दिन आफ्टर माई लास्ट वीडियो ऑन यू, तुमने एक पोस्ट लिखा था जिसमें तुमने लिटरली जंग का ऐलान कर रखा है. उसी पोस्ट में तुम मेरे को कह रहे हो थिंक अबाउट मी लाइक योर एल्डर ब्रदर और फादर, एंड लेटर इन द सेम पोस्ट यू आर सेइंग लेट द बैटल बिगिन. ठीक हो तुम? ये क्या चल रहा है भाई बाप वाली बात? और ये क्या पब्लिक थ्रेट है बैटल बिगिन वाला? यू डोंट थिंक दिस थ्रेट विल लैंड यू इन ट्रबल इन द कोर्ट संदीप महेश्वरी? फिर उसी शाम को तुम ये पोस्ट डिलीट कर देते हो. जैसे तुमने टोटल शायद 15-12 पोस्ट अभी तक डिलीट कर दिए हैं पिछले 2 महीने में, और एक सॉरी पोस्ट लिख देते हो. अब दुग्गल जी सॉरी हैं और आंसू बहा बहा के सॉरी हैं. सुबह तक लेट द बैटल बिगिन, शाम को वो डिलीट करके माई हार्ट इज एकिंग. तुम लोगों को बेवकूफ समझते हो? तुम्हें लगता है लोगों को याद नहीं रहता जो तुम डिलीट कर देते हो? और क्या सॉरी? मेरे इनबॉक्स में लीगल धमकी चुपके से रखे हुए हो और पब्लिकली सॉरी की एक्टिंग कर रहे हो. तुम लोगों को बेवकूफ समझते हो क्या? और लास्ट टाइम क्या हुआ था जब मैंने तुम्हारे कहने पर वीडियो डिलीट की थी? जाओ हेलो संदीप महेश्वरी वाली वीडियो दोबारा देखो और फिर बताओ. दूसरा, ये बात तुम्हारे सॉरी बोलने से और मेरे सॉरी एक्सेप्ट करने से मेरे सॉरी बोलने तक कब कब में चली गई? तुम्हारी कोई भी अपॉलॉजी असली है भी या सिर्फ पीआर है? क्योंकि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑल व्हाट यू वांट इज फॉर मी टू रिमूव माय वीडियो, और कुछ नहीं. उस अटेम्प्ट में यू हैव गॉन फ्रॉम थ्रेटनिंग मी टू अपोलोजाइजिंग टू मी टू थ्रेटनिंग मी टू अपोलोजाइजिंग टू मी एंड नाउ थ्रेटनिंग मी अगेन. तुम ठीक हो संदीप महेश्वरी? और ये एक किस्सा नहीं है, ऐसे 25 किस्से पॉइंट आउट कर दूंगा मैं, पर इस वीडियो में नहीं करूंगा, वरना इस वीडियो का लेवल भी तुम्हारी बातों जैसा हो जाएगा. इफ अ न्यूज़पेपर, अ न्यूज़ चैनल और अ पॉडकास्टर इज इंटरेस्टेड इन दीज डिटेल्स, इन दिस वेरी बिजार एंड पब्लिक फॉर्म ऑफ बुलिंग एंड सप्रेशन, आप मेरे को मैसेज करो. मैं आपको विद प्रूफ सारी बात बताऊंगा, सारी कहानी सुनाऊंगा, फिर आपको जो है उसके साथ जो मन आए वो करना. एनीवे, बिफोर वी स्पीक मोर अबाउट मिस्टर महेश्वरी, हमें ये सारे लीगल धमकियों और अन्य चार्जेस को हैंडल करना पड़ेगा. इस वीडियो का पर्पस है कि आप सीख सको लीगल डिफेंस, कि आप सीख सको कि जब आपको आदमी फर्जी लीगल धमकी दे तो उसे कैसे हैंडल करना है. लीगल डिफेंस बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत लंबे होते हैं, तो बी अ लिटिल पेशेंट, बट एक एक बात का जवाब दिया जाएगा. आप नोटिस करना कैसे करते हैं ये सब. मैं आपको जनरल फ्लो समझा देता हूं. सबसे पहले हम देखते हैं सामने वाले के चार्जेस क्या है, फिर हम देखते हैं कि रेलेवेंट लॉ क्या कहता है उन चार्जेस पे, फिर हम देखते हैं कि हमारे केस के फैक्ट्स क्या हैं, और फाइनली हम देखते हैं कि हमारे केस के फैक्ट्स पर यह लॉ लगता है भी कि नहीं. समझ गए ये प्रोग्रेशन? चार्जेस, लॉ, फैक्ट्स एंड देन एप्लीकेशन. तो आओ बिना विघ्न और बाधा के शुरू करते हैं एक कोर्ट रूम परफॉर्मेंस फॉर फन. My lords, I appear before the court in defense of myself. Which court? I do not know. Because the petitioner in his notice says that they bring me in front of the Honorable High Court of India. And any man that has ever read a book or a newspaper can tell you that there is no such thing as the Honorable High Court of India. Perhaps my detractors would know if they read, and perhaps my detractors would read if they were not so obsessed with their own wisdom. However, I will give the petitioner the benefit of the doubt and argue regardless. As the Honorable Court will see, in arguing for myself, I will give the petitioner many such benefits of doubts at many points in the course of the argument, where one can see that the petitioner's case is pointless, null, and void. I will do so because I want to set the record straight for the petitioner and the public at large once and for all, and show to the court that not only is this case a complete farce, that there is no substance to this case, but also that this case is carefully engineered to produce a specific public sentiment.
It is my contention, my lords, that I appear before you today not because I have done anything to disrespect the national flag or my motherland, but exactly because I have made it proud too loudly. I stand before the court not because I have offended my nation or my people, but because I have offended the petitioner's idea of himself by being unafraid for my motherland and unafraid of him. Let the honorable court make no mistake. This is not a hearing to redress the dignity of our nation. This is a hearing to redress the petitioner's bloodthirst. This is not the hurt of the people we are accounting for today. This is the whims of an individual. However, I do not wish to make these claims before I have presented my defense. Because if I did, there would be nothing left that separates me from my petitioner. The petitioner seeks to accuse. The petitioner seeks to accuse endlessly and accuse egregiously without defending. And I refuse to accuse without defending first. The record must be set straight and truth must emerge. And in the interest of that, I will reach deeper and wider to quell any and all concerns that the honorable court, the respected petitioner, or the public at large might have, even the ones the petitioner has been incompetent in producing. With that, my lords, please give me permission to begin my submissions. My lords, ये केस petitioner आपकी आंखों के सामने इसलिए लाए हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैंने इंडियन फ्लैग की इंसल्ट करी है और कैसे. ये बात जनता तक और आप तक पहुंचाने के लिए पिटिशनर ने रिलेंटलेसली सोशल मीडिया पे मेरे बारे में पोस्ट किया है, एडिटेड क्लिप सर्कुलेट करवाई हैं और कई और एजेंट्स के साथ मिलके ये मैसेज फैलाने की कोशिश की है कि आई हैव इंसल्टेड द डिग्निटी ऑफ द नेशनल फ्लैग. इन टोटल इस पूरे सिचुएशन में द पिटिशनर हैज प्रोड्यूस्ड 2 चार्जेस. चार्ज नंबर 1, पिटिशनर सेज आई हैव वायलेटेड द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 22. Relevant portions are attached. My lords, please note in the surviving evidence, since the petitioner is really fond of erasing any trails of embarrassment, the petitioner has mentioned this thrice and that this is the strongest, most repeated charge that the petitioner has. Charge number 2, petitioner has also casually mentioned some application of the Prevention of Insult to National Honor Act, hereby referred as PINHA or PINHA. My lords may note that there is no surviving evidence where a section or a provision is mentioned. Only loose language has been borrowed from section 2. Okay. I will respond to charge 1 now, my lords. My lords, I plead that the first petition is dispensable at sight. In a landmark judgment on the issue of the flag code's penal validity, it was held by the Supreme Court that the Flag Code of India is not a statute as defined under Article 13(3)(a) of the Constitution of India. This is Naveen Jindal versus Union of India. Relevant portions have been attached. Simply put, one cannot violate the Flag Code of India because the Flag Code is not a law. It is only instructions. This is not mere rhetoric to escape the charges, my lord. Like I said, I will give my opponent the benefit of the doubt in several of these instances. This is merely to remind my opponent to perhaps read a book, or at least read up on the charges they seek to pursue. कि भाई जब केसेस लड़े जाते हैं तो देखा जाता है इन्हीं मुद्दों पर पहले कोई बात हुई है, क्या कहा गया है. और ऐसे ही एक मुद्दे पर बात हुई है नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया लॉ है भी नहीं. आप उस पे से किसी पर लीगल इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? एनीवे माय लॉर्ड्स, मोर ऑन दिस लेटर. द पॉइंट इज दैट चार्ज नंबर 1 इज सो बैड दैट इट इज नॉट इवन null and void. It is non-existent. However, the good news for my opponent is that the language of section 2 of PINHA is similar to the language of Flag Code of India section 3 subsection 22. And so in arguing for charge 2, I will also have to argue on the merits of charge 1. I hope, my lords, that this brings a genuine smile to my opponent's face, even if for one last time before I destroy the rest of his case. Charge 2, my lords. My lords, let us assume the petitioner in fact did petition correctly under the Prevention of Insult to National Honor Act 1971 and wants to hold me liable for violation of section 2 and more specifically explanation 4D to section 2. The relevant portion is attached and highlighted. Also attached and highlighted is section 1 of the act, where the scope and extent of the law is written and the law clearly states it applies only to India. My lords, we must seriously ask at this point, has the petitioner not read up on the charges he seeks to pursue? How can he charge me with a law that doesn't apply to the place I'm in?
हर एक्ट का सेक्शन 1 होता है स्कोप ऑफ द एक्ट, कि बॉस ये लॉ कहां कहां लागू है, कहां कहां लगेगा, कहां कहां नहीं लगेगा। और सेक्शन 2 जनरली होता है डेफिनेशन। बड़े सर ने सेक्शन 2 की लैंग्वेज लेके उल्ट-सुल्ट इल्जाम तो लगा दिए हैं, ये नहीं बताया आपको कि सेक्शन 1 के हिसाब से मेरे पे ये लॉ लागू ही नहीं होता, कि चार्ज 2 भी दरवाजे के बाहर से ही खारिज है। एनीवे माय लॉर्ड्स, हम इस पर भी आएंगे। एक बार पूरे मुद्दे को कवर कर लें, फिर हम इस पर भी आएंगे। अब क्वेश्चन आता है, सपोज मैं इंडिया में होता, सपोज सेक्शन 1 डज नॉट प्रिक्लूड मी फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ, देन डू आई फॉल विद इन सेक्शन 2 एक्सप्लेनेशन 4D? ये है फाइनल लीगल क्वेश्चन। अच्छा, अब फैक्ट्स देखते हैं। फैक्ट नंबर 1, at the time of the petition in May 2022, I was a student at Columbia University in the city of New York. Fact 2, Columbia University is a very respectable and coveted Ivy League university and constantly features in the top 10 of the world university rankings. This is an easily verifiable fact that can be Googled. Perhaps my opponents would know that if they did not think they knew more than Google. It is humbly submitted that according to the Center for World University Rankings, my lords, Columbia is ranked number 7 best university in the world. As a measure of scale, IIM Ahmedabad is ranked 415 and IIT Madras is ranked 557. My lords, let this fact highlight the prominence of the educational achievement of the defendant. If cracking IIT and IIM, some of the best universities in India, is difficult, such that it is the dream of millions, one might say graduating from one of the best universities in the world is a golden achievement. Fact number 3. It is known that American universities do a grand graduation ritual, very much in style with the Western tradition. Fact number 4. It is also known that many students represent their identities during these events because the uniform and the ritualistic aspect of these ceremonies are very Western and Christian in nature. In fact, on the graduation gown is the crest of Columbia with a Christian cross. However, these universities are very accepting of people representing their own identities at these events. People hold and wear flags, change the crest to represent the Star of David, or dress underneath the gown in traditional attire from their nations. At the graduation ceremony of 2022, the most common worn flag was that of Ukraine. कि इन सेरेमनीज का नेचर बहुत ही वेस्टर्न और क्रिश्चियन होता है, इसीलिए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन में कई लोग अपनी आइडेंटिटी को डिस्प्ले करते हैं कई अलग तरीकों से। कुछ लोग अपने पास फ्लैग्स रखते हैं, कुछ लोग गाउन के नीचे अपने देश की वेशभूषा पहनते हैं, कुछ लोग गाउन को ही थोड़े चेंजेस करके अपनी आइडेंटिटी के साथ अलाइन करते हैं। फैक्ट नंबर 5. It should be noted that the university has no problem with it. It is the university and the students' way of displaying pride in their identity in a setting that brings into its fold hundreds of different nationalities, religions, cultures, and languages. Fact number 6. It should also be noted that these ceremonies were presided over by many dignitaries. The list includes Hillary Clinton, ex-Secretary of State of the United States of America, Yo-Yo Ma, cellist par excellence, Patti Smith, rock star from the 70s. It is also suspected, however unknown, that amongst the guests were also Uday Kotak and Arvind Panagadia, two very prominent Indian figures. Fact number 7. I wore the national flag around my shoulder briefly and twice over a 2-ceremony period to represent my motherland and all that it has taught me. I contend with wearing that flag with pride that I am where I am because of India and all that this land and its people have taught me. Fact number 8. In one of the videos from the event, I am seen taking a sip from a bottle that the petitioner contests with no real proof is alcoholic. I am seen possibly wearing the same flag. The shot is 1.5 seconds long and played twice in the edited video uploaded by the petitioner for dramatic effect. ये फैक्ट्स हैं रफली। अब हमें देखना है कि लीगल क्वेश्चन PINHA सेक्शन 2 एक्सप्लेनेशन 4D इस पर लगता है कि नहीं। माय लॉर्ड्स, आई वुड लाइक टू बिगिन by asking 4 questions that I have first. Question number 1. How many people in the world, much less India, get to attend a university like Columbia University at all? Question 2. How many people can claim that they displayed the Indian flag with pride in a foreign country on the day of a rare and profound accomplishment in their life in front of thousands of people of different nationalities? Question number 3, my lord. How many people can claim to have carried the Indian flag on display in front of dignitaries like Hillary Clinton? Number 4. In fact, my lords,
The following is humbly submitted as a question. How many Indians get to display the pride of the Indian national flag at all? How many ever do it? How many ever get an opportunity to do it? My lords, in questions के obvious answer से मेरी intention obvious हो जानी चाहिए. Even from a very plain watching of the vlog from which the footage is edited out by the petitioner and displayed as an insult to the national flag, one can see that the intent behind wearing the flag is completely patriotic and respectful. In fact, the very song playing in the back of the vlog from which the edited footage is gathered says, "I got loyalty in my DNA." This is a conclusion that a 4-year-old could come to. My intention is clear and the court must keep it front and center as we move forward with this case. कि ये जो 4 सवाल है ना, जो मैंने तुमसे अभी पूछे, एक बार उनको अपने आप से पूछ के देखो और फिर मेरे को बताओ कि भाई इस आदमी की, भूल जाओ प्रखर है, क्या इंटेंशन हो सकती है फ्लैग पहनने की. अगर अभी भी ये पूछ लेने के बाद भी आपको मेरी इंटेंशन क्लियर नहीं हो रही, तो जाओ दोबारा व्लॉग देखो. पीछे गाने में बोल रहा है आई हैव लॉयल्टी इन माई डीएनए. मेरी इंटेंशन पर कोई सवाल नहीं है. और ये चीज कृपया कोर्ट और आप सब लोग याद रखें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे. नाउ माय लॉर्ड, द इंटरप्रिटेशन ऑफ PINHA 1971 is very comprehensively covered in Amgonda Vitoba Bandare versus Union of India 2012. The facts of the case are slightly different, but the underlying charge and issue is similar. And the Bombay High Court, in its order on the issue, held that one of the essential ingredients of the said offense, disrespect to national flag and such, is that disrespect and contempt of the flag should be intentional. Relevant paras are reproduced. कि disrespect होने के लिए mens rea, जिसे intention कहते हैं, के साथ disrespect होनी जरूरी है, वरना वो disrespect नहीं, कोर्ट का टाइम वेस्ट है. In the case of D. Senthil Kumar versus the state of Tamil Nadu, where facts of the case were slightly different, but the underlying issue of law and interpretation were the same, Madras High Court held that what is deduced is that mens rea, which is the cause to insult, show disrespect, or to bring into contempt towards the national flag or the constitution, is seen at a high threshold. कि disrespect की intention का minimum criteria high है. या तो disrespect की intention obviously दिखनी चाहिए या सामने वाले को साबित करनी होगी, वरना आप कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं. Relevant paras are reproduced, my lords. In the case of Ganesh Lal Bathru versus the state of Madhya Pradesh, in the High Court of Madhya Pradesh, the order held similarly. The relevant para is reproduced. The order says, from the perusal of the relevant provisions of this act, so also the code, and on careful scrutiny of materials on record, it is clear that there is a dearth of materials to show an intention or mens rea to disrespect the national flag and thereby to undermine the sovereignty of the nation. कि कोर्ट आपका केस खारिज कर देगी अगर आप नहीं दिखा पाए कि डिसरिस्पेक्ट किसी इंटेंशन से किया गया है, क्योंकि बिना इंटेंशन के प्रूफ के साथ अगर आप कोर्ट जाते हैं तो वो कोर्ट का टाइम वेस्ट करना है. All these case laws are covered and relied upon in D. Senthil Kumar's case in Madras High Court. The order is attached below. 3 important principles emerge from these 3 important case laws that the Honorable Court have considered in the history of flag disrespect litigation. कि इन 3 केस लॉ से 3 प्रिंसिपल निकल के आते हैं. प्रिंसिपल 1, whether an act is insulting depends on intention. Principle 1, intention क्या है? Principle 2, that the threshold for proving mala fide intention is high. That is, that the mala fide intent must either be very obvious and apparent, or the onus is on the petitioner to prove if the intent behind any action was mala fide at all. कि बुरी intention prove करने का भार सामने वाले पे है. And principle number 3, that a dearth, एक कमी of being able to prove intent would lead to the case being dismissed. और अगर आप बुरी intention prove नहीं कर सकते तो अपना केस लेके घर जाएं. From a simple reading of these 3 case laws and the principles of interpretation laid down by the courts, it would seem that the case is completely dismissible at this point. The courts have given primary importance to mens rea in deciding whether an actual insult is delivered to the flag or the country. Not only that, it would seem that the courts are very sensitive to the misuse of law in these cases. Besides, the petitioner has done nothing to show that my intention is disrespectful, and quite frankly, they know that. They know I did not have the flag on me for disrespect. They don't wish to pursue these legal charges 1 or 2, seriously. They seek to use this legal language to make a broader emotional case. One can even say
they seek to drape their private motivations in the flag. कि पिटिशनर भाई ने बिल्कुल फाइट मारी भी नहीं है कोई इंटेंशन दिखाने की, और वो मारना चाहते भी नहीं है. वो सिर्फ चार्ज 1 और चार्ज 2 यूज कर रहे हैं टू बिल्ड एन इमोशनल केस जिसमें ऑडियंस फंस जाए, आप लोग जिसमें इन्वेस्ट हो जाओ. कि पिटिशनर भाऊ चार्ज 1 और चार्ज 2 जो कि प्रॉपर लीगल चार्जेस नहीं है, उनकी लीगल लैंग्वेज को यूज करके आपको इमोशनली कहीं और ले जाना चाह रहे हैं. सो इट इज माई रिक्वेस्ट एट दिस पॉइंट दैट चार्ज 1 and 2 be dismissed on the count of 1 invalidity of charge, 2 lack of jurisdiction, and 3 simply relying on previous case laws that have settled matters like this several times in very clear language. There is no legal case here. Now my lords, charge 1 और 2 तो हर तरह से खारिज है पर अनसक्सेसफुल नहीं है. Like I had mentioned, ये केस नेशनल डिग्निटी का है ही नहीं, ये पर्सनल वेंजेंस का केस है. क्या मेरे ओपोनेंट को ये नहीं पता कि ये केस कितना खाली है? पता था तो उन्होंने फिर भी मेरे को पब्लिकली 2.5 करोड़ लोगों के सामने इस सब में क्यों फंसाया? नहीं पता था तो माय लॉर्ड्स, आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरे ओपोनेंट को ये सब देख लेना चाहिए था, पढ़ लेना चाहिए था, या जो मिले उठा के फेंको बिकॉज हमें तो बस पब्लिक को कंफ्यूज करना है? माय लॉर्ड्स, ये पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं क्या? एक्चुअली माय लॉर्ड्स, गेम थोड़ी गहरी है. मेरे पिटिशनर ने चार्ज 1 और 2 यूज किया है टू प्रोड्यूस अ शातिर चार्ज 3. Charge 3 is an implied charge. It is not explicitly mentioned as a separate charge, but in effect, the petitioner has used charge 1 and 2 to build pressure on charge 3. What is charge 3? Charge 3 is the emotional case that the petitioner has made to the public and has 2 parts. 1, that I supposedly drank alcohol while supposedly wearing the flag. And 2, that it has somehow disrespected the Indian people. और चार्ज 3 को इस शातिर तरीके से लगाने का एकमात्र पर्पस है मेरे पे प्रेशर डालना. सो आई रिमूव माई ओरिजिनल वीडियो हेलो संदीप महेश्वरी. माई लॉर्ड्स, कीप दिस इन माइंड एज आई हैंडल चार्ज 3. Charge 3. Firstly, it is important to restate, my lords, that there is no law that covers charge 3. That there is nothing about food or alcohol in PINHA or FCI. However, I will argue against these charges because these are the actual charges that the petitioner has levied on me. Charge 1 and charge 2 was just a ruse, were an excuse to actually get public sentiment invested in charge 3. The petitioner wants people to feel enraged by the supposed alcohol flag combination. And thus, I shall speak to the court and the people on charge 3. कि भाई ने जो फोर्स कॉम्बिनेशन दिखाया है ना सपोज्ड अल्कोहल और फ्लैग का, आओ उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि चार्ज 1 और चार्ज 2 तो बहाना है चार्ज 3 में सेंटिमेंटल वैल्यू ऐड करने का. My lords, the petitioner says that I'm insulting the flag by drinking alcohol while I wear it. For the sake of charge 3, my lords, let us assume that I did in fact hold a bottle of alcohol in my hand. Well, first, my lords, let me make a very obvious and non-subtle distinction between drinking and taking a ceremonial sip. Alcohol of the nature of champagnes, etc., is consumed as a ritual of celebration across the world, including India, but particularly in Western countries. This ritual does not tantamount to drinking, where drinking is drinking for personal pleasure. This is participating in rituals, just how the Jewish people take a sip of the wine in their Shabbat practice. In neither cases is the alcohol consumed to get drunk or results in one getting drunk. The alcohol is merely consumed as a beverage. The defining feature of that beverage in these contexts is not their alcoholic content, but the collective sentiment and history of the people. The fact that this has to be made clear to the petitioner is in itself a statement on the petitioner's general level of intelligence. It seems that my 7-year-old nephew, who understood the context of this situation, is smarter than the petitioner. Perhaps he too should run a motivational channel. ये चीज ध्यान से समझना, लॉ में क्या चीज क्या है उसका मंथन करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप नई गाड़ी लेने के बाद नारियल फोड़ते हो तो क्या वो नारियल नारियल है या प्रसाद आशीर्वाद है? गाड़ी खरीदने के कॉन्टेक्स्ट में नारियल की मेन क्वालिटी क्या है कि हम उसे खा सकते हैं, या उसके पीछे जो लोगों का भाव जुड़ा है, एक इतिहास जुड़ा है. इसी तरीके से क्या सेलिब्रेशन में शैंपेन पीना इज द सेम एज दारू पीना? ये एक लीगल क्वेश्चन है. उसी हिसाब से क्या जूइश और क्रिश्चियन लोग जो अपनी अपनी सेरेमनीज में एक सिप वाइन पीते हैं, क्या वो शराब पी रहे हैं?
क्या उन रिचुअल्स में वाइन शराब है या एक ड्रिंक है जिसकी मेन क्वालिटी उसके अंदर की शराब नहीं, उसके पीछे की हिस्ट्री है? क्या इन सब एग्जाम्पल्स में प्राइमरी इंपॉर्टेंस नशा है या रिचुअल्स की मान्यता है? इसी तरह जब सेलिब्रेशन में शैंपेन की सिप ली जाती है, जैसे स्पोर्ट्स वाले लोग करते हैं, उस बिहेवियर को शराब पीना नहीं कहते, उसे एक रीति रिवाज में भागी होना कहते हैं. सो फर्स्ट, it must be noted that I did not drink to get drunk, much less insult the national flag. That is not my intention. However, what is obnoxious about this whole situation is that in this petition, I have to defend my intention twice over two issues: why I drank and what was my intention behind wearing the flag. While the petitioner has given no statement or defense on their intention. Not even once, my lords. And this is besides the fact that the original video from which the contested footage is edited shows my intention behind both those things. कि मैं अपने आप को 2 बार डिफेंड करूं और मेरे सामने वाला 1 बार भी नहीं. Lastly, my lords, I have only one thing to say about the general nature of alcohol. Alcohol, we know, has been the cause of many problems in our civic structure, no doubt. However, if we were to consider the extreme bad use case of alcohol, we must also consider the neutral use case, if not the extremely good use case of alcohol, in defining what alcohol represents. People of India and the world drink all the time peacefully for recreation. That type of consumption must not be villainized, not at least in a court of law. It is the fundamental right of people to consume alcohol, and more importantly, it is a personal preference that should attract no moral scrutiny from another person, especially one that is not directly affected, and especially in the case where there has been no violation of law and no jeopardy to another citizen. The harmless consumption of alcohol must not be judged by another man, especially a man who himself has solid introspection to do about his moral behavior. It is argued, my lords, that if a man tries to stigmatize benign and minimum alcohol consumption of this ritualistic and celebratory nature, then they are trying to close the mind of the people instead of open them further. कि जो आदमी इस टाइप की सेलिब्रेटरी अल्कोहल कंजम्पशन 1 सिप जितनी विलेनाइज करने को रेडी है, वो तुम्हारा दिमाग खोलना नहीं चाहता, बंद करना चाहता है. This is important because the petitioner claims that the motivation behind their public persona is the latter, to open the mind of the people. While clearly for personal vengeance they will use all Sam, Dam, Dand, Bhed to their advantage. For personal vengeance, my lords, the petitioner will stand by no principle they have voiced otherwise. It is all my way or the highway. And that begs the question, my lords. Is the petitioner fit enough anymore to yield the credibility that they have acquired over a decade on social media? Is this not dangerous behavior, my lords? A man that has an audience greater than the size of many countries, should he be allowed to use those powers like a dictator? कि मिस्टर महेश्वरी, अगर आपका यह कहना है कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, कितनी भी क्वांटिटी में, कभी भी किसी भी आदमी के पेट में 1 बूंद भी शराब गई हो और वो पाप है, तो तुम लोगों का दिमाग खोलना नहीं, बंद करना चाहते हो. अरे हमारे धर्म की खासियत है चीजों को कॉन्टेक्स्ट में रख के इंटरप्रेट करना. धर्म का संदर्भ ही धर्म का सार है, यह तुम्हें सिखाना पड़ेगा. अगर आप शराब जैसी चीज को सिर्फ उसके अनुचित रूप में देखते हैं और दिखाते हैं, तो आप खुद को और दुनिया को सच नहीं बता रहे, क्योंकि आपने सही गलत को उसके कॉन्टेक्स्ट से निकालकर एक स्टिग्मा क्रिएट कर दिया है और कुछ नहीं. Anyway, my lords, let me come to the final question that can be raised out of this issue, the question of public sentiment. If any minor segment of the population still feels offended without direct influence from the petitioner, कि कोई भी अभी भी offended है without direct influence from जो आदमी इस बारे में बात करे जा रहा है, my lords, then I have this to say. My lords, the courts exist in the interest of justice. And like is known and seen, Lady Justice is blind and unprejudiced. The courts must stand unprejudiced to the accused and unprejudiced to the public sentiment. This is not to say that public sentiment does not matter, but in the day and age of modern communication technology, when things can be made to look like something else all the time, the court must apply the litmus test of common sense and apparent interpretation. Otherwise, the courts will be a slave to public sentiment, and in turn, a slave to all fake news type propagandists in the world. Not only that, my lords, it is contended that it is not the job of any constitutional body to infantilize its masses, to feed their manufactured whims.
the courts cannot treat the citizens of the country as children, because then the courts will forever be forced to follow the whims of these children. The purpose of the courts, my lord, is justice. Forgive me for repeating that, but I must do so in case the stakeholders in my very public trial forget that what is important is the truth. That facts take precedence over feelings, and it is in fact the duty of the court, the duty of all noble men and women of the audience, and the duty of every rightful citizen to uphold that virtue. It is only in fear that we bend away from the truth, and we cannot afford to be afraid. My lords, I encourage the Honorable Court to see my display of the flag as an act of unconditional patriotism. If not, my question to the court and the petitioner is, how else is one allowed to be proud of their identity in foreign lands, in a foreign competitive environment, in a foreign competitive environment of such prominence, in a silent and symbolic fashion? Flags are, after all, meant to be the symbol of national pride, as mentioned in the PINHA. If this is not the display of national pride, my lord, what is? And this display of national pride is preserved for me under Article 19 of the Constitution of India. Charge 4, my lord, defamation. Now we have arrived at the most real part of this entire situation, my lord. The charges of defamation should tell the court and the public that all this disrespecting national flag drama comes only for the sake of bringing people on their side so they can remedy the injury to their self-concept. The petitioner wants only one thing from the whole flag situation: to silence me and get my video removed. And the charge of defamation is only a tool to do the same. I contend that this is not an issue of national importance at all. My lords, note how carefully the petitioner has attached his concerns of injury to self-concept with the concerns of the nation, which I have rightfully proven are void and malicious, if not void and incompetent. In fact, my lords, my appeal to the court is to see the petition for what it truly is: a personal vengeance masked behind a non-issue that has been extrapolated to national concern. My opponent seems to think what hurts him can be dressed in another way to say it hurt the people. It seems that either my opponent thinks too highly of their own sentiment or too little of the sentiment of the people to make that equivalence. It is laughable what the petitioner seems to manufacture. However, I must begin by responding to the charges itself. ये जो defamation के charges है ना, ये चुपके से एक सच बता देते हैं हमें। पर इस सच को समझने के लिए इसके कॉन्टेक्स्ट को ध्यान से देखिएगा। ये defamation के charges बहुत स्मार्टली फ्लैग के लीगल चार्जेस के साथ जोड़ दिए गए हैं ताकि एक इमोशनल वजन बने लोगों के लिए टू गेट इन्वेस्टेड इन द defamation चार्जेस। और इस इमोशनल वजन का एकमात्र पर्पस है प्रेशर डालना मेरे पे ताकि मैं अपनी वीडियो हटा दूं। ना ही फ्लैग वाले चार्जेस असली हैं जो मैं दिखा चुका हूं, ना ही डेफेमेशन वाले चार्जेस असली हैं। इश्यू सिर्फ इतना है कि भाई को हुआ है बहुत दर्द मेरी क्रिटिसिज्म से, और इसलिए भाई ने अपनी निजी चोट को देश की चोट बनाने का षड्यंत्र रच लिया है। First of all, my lords, over the many messages, posts and videos that the petitioner has sent, written and uploaded, he has never mentioned what is it that I have said that is defamatory. My lords, if a person was to send a notice and say one has committed a crime and not say which crime or where exactly, will one take it seriously? The petitioner has tried to sound so professional in their public language, but have failed to mention even once what part of my creative work they find so offensive to their own self. Why has the petitioner not mentioned even one instance of said defamation pointedly? Simply because there is none. Simply because there is none. However, my lords, the petitioner has continued to say everywhere in at least 4 occasions how I have used galis or been derogatory and defamatory. Is the petitioner seriously interested in accusing me of defamation, or do they only want to create a public sentiment of this nature? Notice, my lords, again how his concerns of defamation are carefully stitched with the concerns of the national flag and followed up with, let us take a stand for our nation's dignity. कि भाई ने कई बार वीडियो, पोस्ट, मैसेज सब जगह ये बोला है कि मैं डेफेमेटरी हूं, मैंने गालियां दी हैं, अब्यूजिव हूं, ऑफेंसिव हूं, पर एक बार भी इन्होंने बताया है कि एक्चुअली क्या बात है जो डेफेमेटरी है या अब्यूजिव है या ऑफेंसिव है? बताओ।
नहीं ना। कितनी अपॉर्चुनिटी थी इनके पास ये बताने के लिए कि एक्चुअली डेफेमेशन कहां हुई है, नोटिस भेजते हुए, पोस्ट डालते हुए, पर वो नहीं बताएंगे क्योंकि इनफैक्ट कोई डेफेमेशन नहीं है। और उन्होंने अगर पॉइंट आउट किया तो लोग ये सच देख लेंगे कि कोई डेफेमेशन नहीं है। इससे बढ़िया ऊपरी ऊपरी लेवल पर बोलते रहो डेफेमेशन है, लोगों का साथ बना रहेगा, है ना। ये चाहते ही नहीं आप रिसर्च करो खुद, ये चाहते हैं आप इनकी बनाई हुई कहानियों में विश्वास कर लो। सेकेंडली माय लॉर्ड्स, दिस मैन हु रिफ्यूजेस टू पॉइंट आउट वन इंस्टेंस ऑफ डेफेमेशन is the same man who has accused me of creating communal tensions that could lead to riots. His words, not mine. And national disrespect over the last 2 months. Notice the pattern of exaggerated claims, my lord. I am a 26-year-old student sitting in the United States, and I have somehow disturbed national peace twice in 2 months from the United States, while I also finish my education and build my career. Does nothing sound wrong to you with this? If this is not slander and defamation, how is me calling his content mediocre or making a meme on him defamatory? I feel like the court has to look into bigger things before they begin to decide if calling someone mediocre is defamatory, and the petitioner needs to introspect, something that they are famous for teaching the world. ये आदमी जो defamation पर पेले जा रहा है, इससे पूछो इसने मेरे को क्या क्या ब्रांड नहीं किया है पिछले 2 महीनों में। अगर आप इनका चैनल फॉलो करते हैं तो मैं इंडिया का नंबर 1 पब्लिक एनिमी हूं। मैं एक 26 साल का स्टूडेंट जो अमेरिका में बैठा है, जो अपने करियर और अपने एजुकेशन पे ध्यान दे रहा है, मैं इंडिया का नंबर 1 पब्लिक एनिमी हूं इनके हिसाब से। इनसे पूछो इन्हें एहसास भी है इनकी बेवकूफी और सेल्फिशनेस के चक्कर में मेरी फैमिली पे एक सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है आज की डेट में। ये आदमी जो जब जो मन आए पोस्ट करके डिलीट कर देता है, इससे पूछो क्या ये एक बार एक पोस्ट लिखने को रेडी है जहां ये बोल सकता है कि मेरी फैमिली और मैं सेफ रहने चाहिए, कि ये डिसएग्रीमेंट सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल डिसएग्रीमेंट है, फलाना ढिमका है, इसका कॉन्सिक्वेंस फिजिकल वर्ल्ड में नहीं होना चाहिए। संदीप मैं तुमसे पूछ रहा हूं रियली, क्या तुम ये लिख के दोगे मेरे को प्लीज? Thirdly, my lords, note the malice in my accuser's actions. Notice, on 24th May, one day after I put out my video responding to his first bout of bullying, he tweeted for the first time in several years. What was the tweet? You know why he rose from the dead on Twitter to post this? Because issues of nationalism are more likely to catch fire on Twitter, and the petitioner knows that. Not only that, why has the petitioner continued to use the issue of national flag as a legal backing to turn the public against me when they know there is no case? Given that not knowing the law, or in this case not knowing what is not law, is no excuse, especially for the petitioner, it would seem that the petitioner is merely trying to waste the time of the court. Or perhaps a better question to ask is, why has the petitioner not read up on the charges they seek to pursue? Why has the petitioner not read up on the charges they seek to pursue in front of the court or in public in front of 2.5 crore people? Did they even know that Flag Code of India is not a law and thus I cannot be legally charged under the Flag Code of India, or that PINHA doesn't apply outside India? If they did not, one must question the desperation behind the motivation to legally charge me with whatever Googleable words they could come up with in the first 5 seconds. Something that is not even a law. If they did, then, my lords, one must ask if they assumed that the audience is too stupid to find out that they are outright lying, if not just reducing themselves to a complete embarrassment. Or perhaps, my lord, something worse is afoot. Perhaps my opponent doesn't even care if some people find out, as long as the scrollers and the casual consumers believe what my petitioner has said on the face of it. This is the very modus operandi of fake news and propagandists, my lord. From the book of Goebbels himself. My lords, is this man even fit to yield the audience size that he does anymore? A proper propagandist, a liar, and a manipulator with 23 million people watching him. That is dangerous. Fourthly, my lords, it is important to point out the circumstance in which the petitioner uploaded the edited video of me with the flag and removed it and then uploaded it again. The petitioner uploaded the edited flag video for the first time on 5th July on his second channel, Sandeep Maheshwari Spirituality, with a post on his main channel, Sandeep Maheshwari, to build pressure on me to remove my video, Hello Sandeep Maheshwari. This case is a lot of Sandeep Maheshwari, my lords. I refuse to bow. So the next day, the petitioner sent me a private apology
and said they will delete their video and their post. A change of heart, one might say, but not quite. This was a trick, my lord. As soon as they sent me this private apology over text with a promise to delete their videos, they quickly sent me an email saying, now I have deleted my videos. As per our conversation, you delete your videos. My lords, note that this email was sent to make something official that did not even exist. They manufactured an agreement under the excuse of an apology and quickly tried to make it official using emails. I responded with this and refused to comply with any of the petitioner's trickery. This got the petitioner angry and this made him upload the video again, this time on their main channel to 2.5 crore people to raise the stakes on the pressure they put on me. छोड़ो, नहीं समझ आ रहा तो छोड़ो ये वाली बात. क्या गिनाऊंगा मैं तुम्हें तुम्हारे सर्वशक्तिशाली बाहुबली की ट्रिक्स? थक जाओगे, उल्टी कर दोगे, लिस्ट खत्म नहीं होगी मेरी. Fifthly, my lords, please notice the size of our audiences. The petitioner put up posts and videos for 23 million people, which my lord must note is equal to the total number of Indians on a platform like Twitter, which itself is of very serious concern to the courts, saying that it was not that he felt insulted about himself, but that he was in fact insulted for the nation. 23 million people is a lot of people, my lords. If the courts concern themselves with a fraction of this number when it comes to issues of fake news, censorship and such on Twitter, and hold Twitter and Facebook legally responsible for fake news, then the Honorable Court must hold the petitioner responsible for spreading misinformation, if that is indeed what the courts conclude. कि कोर्ट्स अगर इस मुद्दे पर विवाद करते हैं कि ट्विटर, जिस पर यूजर बेस इंडिया का उतना ही है जितना मिस्टर महेश्वरी की ऑडियंस है 2.5 करोड़ लोग, कि ट्विटर और फेसबुक जिस पर फेक न्यूज इलीगल है, तो यहां जहां मेरे कैरेक्टर पर फेक न्यूज की गोलियां मारी जा रही हैं मिस्टर महेश्वरी के द्वारा, उन्हें कोर्ट उसी तरीके से ट्रीट करेगी कि नहीं? So, my lords, in conclusion, here is a man that has threatened me privately and publicly, tried to tell 2.5 crore people for over 2 months that I want them to somehow be offended and fight, tried to manufacture a Twitter trend to silence me, used fake legal charges to create a specific public sentiment, tried cheap childish trickery, and when they failed, tried to build humongous public pressure on me out of spite. And this man wishes to sue me for defamation. I asked the court to point out one instance where anything I said about my opponent was defamatory or nearly as bad as insulting the nation's dignity or causing communal tensions. What I said was mere criticism and humor, a response that only the ego cannot digest. कि जो आदमी मेरे को इंडिया का नंबर 1 पब्लिक एनिमी घोषित करके ये नहीं इंट्रोस्पेक्ट करता कि उसने कहां डेफेमेशन करी है, वो मेरे एक मीम या मेरे एक बार उसे मीडियोकर बोलने को 1 मिनट नहीं लगा रहा डेफेमेशन बोलने में. Lastly, my lords, why would the petitioner go to such lengths to do this? There is only one simple answer. For me to remove my video where I stand up to his bullying. The man cannot tolerate that someone is unafraid of him and that someone is right in their disagreement with him. The man wants absolute control and will go to any extent to manage that. And I refuse to be his victim any longer. Like I said in the beginning, this is not a case for the nation's pride, but a case for the individual's ego. So with that, my lords, I ask, shall we appear in the courts and do this properly? संदीप महेश्वरी, सबसे पहले इस पॉइंट के बाद पब्लिकली कोई बात नहीं होगी जब तक तुम मेरे को और मेरी फैमिली को एज एन एक्ट ऑफ ग्रेस लिखित में नहीं दोगे कि हम सेफ हैं. क्योंकि बॉस, पिछले 2 महीने में तुमने मेरे को कम्युनल राइट से लेके नेशनल डिसरिस्पेक्ट सब चीज़ों के लिए चार्ज कर लिया है. और मैंने तुम्हें टोटल क्या बोला है? मीडियोकर. ये यूट्यूब बीफ नहीं है. यूट्यूब बीफ तब होती जब तुमने मुझे बेवकूफ़ बोला होता या मेरे आइडियाज़ को बोरिंग बोला होता. तुमने मेरे पे कम्युनल राइट से नेशनल डिसरिस्पेक्ट के इल्ज़ाम लगाकर 2.5 करोड़ लोगों को गंद फैला दी है. इसे बीफ नहीं, डेफेमेशन कहते हैं दोस्त. कल को एक भी आदमी का दिमाग फिरक गया, फिर कल को किसी ने मेरे को गूगल करने की कोशिश करी और उसको ये सब मिला, फिर तुम्हें अपनी ऑडियंस की साइज का बिल्कुल भी अंदाजा है या कुछ अलग ही घूम गए हो? अबे उनका सोचो यार, जो लड़के तुम्हें, जो लोग तुम्हें 10 साल से फॉलो कर रहे हैं, तुम्हारे कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं संदीप सर आप क्या कर रहे हो. मेरा छोड़ो यार, अपना सोचो. तुम्हें नहीं करना काम, ये यही करना है प्रखर के बारे में बातें हैं. भाई, हम इसलिए थोड़ी आए थे इंटरनेट पर, हम इसलिए थोड़ी हमने अपने करियर स्टार्ट किए थे जीवन में कि हम ये करें.
2 महीने खींच दिए तुमने ये बात। अपना काम करो मित्र, मैं अपना काम करूंगा, हम आगे बढ़ेंगे, हम लोगों की मदद करेंगे। हम इसलिए नहीं आए थे क्या इंटरनेट पे, ताकि हमें जितना कुछ थोड़ा बहुत पता है उससे हम लोगों की मदद कर सकें? तुमने मेरे को पहचाना नहीं है क्या अभी तक? तुम्हें लग रहा है अभी भी मेरे को तुम डरा दोगे, मैं डर जाऊंगा क्या? अब तो समझ जाओ क्यों खींच रहे हो। सबने देख लिया ब्रो असलियत क्या है, सबने देख ली असलियत क्या है। क्या चाहते हो? यही सब करते रहे हम इंटरनेट पे रोज बैठ के? तुम फेंको मेरे पे गंदगी, मैं साफ करूं, मेरे को 50-60 हजार यूं ही फॉलोअर मिले, यही चाहते हो? मैं लेजिटिमेटली अगर पॉइंट बाय पॉइंट ब्रेक डाउन करने लगा ना हर चीज, तो तुमने इतनी इज्जत कमाई है लोगों को, इतना तुम कॉन्सेप्ट हो लोगों के लिए। तुम्हें पता है, तुम्हें लोग देखते हैं, उन्हें उम्मीद आती है दिमाग में, उनको भरोसा आता है दिमाग में कि हम भी आगे कुछ कर सकते हैं। तुम ये कर रहे हो उस कॉन्सेप्ट के साथ, उस लेगेसी के साथ। ये है तुम्हारी गेम। जागो, सर पर चढ़े हुए हो मेरे 2 महीने से, जागो। क्या बोलूं यार मैं, मां कसम अच्छा लग रहा है भाई, आधी उम्र का हूं, तुमसे डांट रहा हूं तुम्हें। बहुत इज्जत मिल रही है इस चीज से। एक सिंपल सोल्यूशन है यहां से, भूल जाओ ये सब हुआ। मैं कोई वीडियो कहीं नहीं हटाऊंगा, कभी भी, कैसे भी। तुम्हें कुछ हटाने की जरूरत नहीं है, मैंने कभी भी नहीं बोला कुछ डालो या हटाओ तुमसे। अपना काम करो, लोगों की भलाई करो, नेकी करो, उद्धार बनो, और मेरे को भी वही करने दो यार। बहुत प्यार से बोल रहा हूं, ओके? और बाकी लोग, होपफुली this will be the last time I speak about this publicly, although I cannot promise it, because frankly अभी तक जो मैंने चीज़ें नोटिस करी हैं, the only leverage I get against this man, because he will go to whatever extent whenever he wants, is speaking to you guys. इनको कोई लॉजिक, रैशनैलिटी, दिमाग, कुछ नहीं चलता इनके लिए, रीजन, सिर्फ पब्लिक रेपुटेशन। But hopefully we will not do this anymore. Hopefully this is the last of it. Hopefully you learned something new from this. अगले हफ्ते से हम लोग कंटेंट डालना शुरू करते रहेंगे। आप कंटेंट एंजॉय कीजिए। होपफुली हम इस सबसे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। होपफुली इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ एक नया दृष्टिकोण आया होगा आपके पास, एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा आपको चीज़ों पे। बट बियॉन्ड दैट डूड, व्हाट अ राइड। विल बी बैक नेक्स्ट वीक विद मोर कंटेंट, एंड देन फ्रॉम देयर गाड़ी चलती रहेगी। आप यहाँ आते रहिएगा दरबार में, हम शेरों को हमेशा वेलकम करते हैं। शेर गैंग ओपी हो जाना चाहिए कमेंट्स में फट।